what are the relevant parts of the newspaper and what are the, I would not call them irrelevant anyway, but not important for your exam if you're preparing for judicial services or any competitive paper as compared to law. Firstly, know your syllabus. See, for example, I'll give you a very simple example in this. जब हम लोग कॉलेज में हम लोग प्रिपेयर करते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, फॉर एग्जाम्पल सेमेस्टर एग्जाम हमारा आ रहा होता है, ऑफ कोर्स वी नो कि किसी भी सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स तो नहीं आ रहे होते हैं, है ना. सो हम जो यूनिवर्सिटी ने हमें सिलेबस दिया होता है उसको कॉरेस्पॉन्ड करते हुए हम अपनी टिक लगा लेते हैं बुक में कि ओके दीज आर द टॉपिक्स दैट आई हैव टू स्टडी, एंड देन वी मेक श्योर दैट वी आर इन्वेस्टिंग आवर टाइम इनटू दीज टॉपिक्स अलोन. और हम कहीं इधर उधर, वी नॉट लाइक बीटिंग अराउंड द बुश एंड यूजलेसली वेस्टिंग आवर टाइम. इसीलिए जब हम न्यूज़पेपर रीडिंग की बात करते हैं, इट इज वेरी मच डिजायरेबल दैट यू नो व्हाई यू आर रीडिंग दिस न्यूज़पेपर. अब कुछ लोग होते हैं जो सिंपली लाइक यू नो टू नो दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड वो न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, सो ऑब्वियसली दे विल नॉट पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू द डिटेल्स. Those who are preparing for civil services, they will look into the details as per the requirement of the paper of civil services. But if you are preparing your exam for the judicial services or any other competitive paper in law, you should know what the examiner asks from me in such an examination. And this is the kind of information that I have to hunt from this newspaper. वो होगा कैसे? I would suggest जब आपके इनिशियल डेज होते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने के, एंड ट्रस्ट मी इवन नाउ डेज इफ आई हैव टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम, इवन टिल डेट आई कीप माई सिलेबस अलॉन्ग, मैं अपने न्यूज़पेपर रीडिंग के साथ में रखती हूँ, सो दैट मुझे किसी भी टॉपिक पे कंफ्यूजन होता है तो आई कैन डायरेक्टली नेविगेट थ्रू द सिलेबस एंड नो दैट दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड दिस इज हाउ आई हैव टू कवर दिस पोर्शन. सो व्हाट यू डू इज, फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर रीडिंग से पहले तो आई वुड सजेस्ट दैट आप कल से अगर न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं तो आप आज रात में अपना सिलेबस अच्छे से देखिए, क्या टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन पेपर्स को देखिए, ताकि जब वो सिमिलर नाम आपको न्यूज़पेपर में मिले यू आर एबल टू रिकॉल दैट यस दिस इज समथिंग दैट हैज कम अप फ्रॉम माय सिलेबस एंड आई कैन actually find some connection between these two topics. So the first recommendation would be to know your syllabus, know your exam, that what you are preparing for. Secondly, the PYQs, previous year questions. Now, इनके बारे में जितना एम्फेसिस किया जाए इट वुड बी लेस, बिकॉज दीज विल ओनली गाइड यू थ्रू स्किमिंग द राइट थिंग्स टू गेट फ्रॉम द न्यूज़पेपर. आप जब न्यूज़पेपर को एज एन अपने जो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको आप एनालाइज करेंगे, so you would get to know that okay fine, these are the kinds of questions that are asked in the current affairs section, or these are the kind of questions that are asked from this kind of news. So पता चला, I'll give you some example. जैसे कोई नई स्पीशी डिस्कवर हुई है, we'll just cover it into today's discussion as well. बहुत recently भी एक lizard की एक नई स्पीशी फॉर एग्जाम्पल अभी डिस्कवर हुई है. अब आपने उसका साइंटिफिक नाम भी याद कर लिया, आपने उसके भाई बहनों का नाम भी याद कर लिया, सारी मिलती जुलती स्पीशीज का नाम याद कर लिया, but what is the point if it is not going to be asked in the exam? So that is why you need to go through some question paper, previous year paper, and you need to see question आता कैसा है. So basically questions बहुत generic आते हैं because obviously it's not a science and tech paper per se जो एकदम वो lizard का scientific name ही आपसे पूछ लेगा, but you should have basic awareness कि अच्छा यहाँ पे इस type का lizard मिल सकता है. So that is why आपको previous year questions ही guide करेंगे कि किस depth तक और किस width तक आपको उस topic को prepare करना है. Then next, headlines are your friends. Obviously, ये तो मतलब हम सभी करते थे जब कॉलेज में भी होते थे, कोई टॉपिक पढ़ना नहीं होता था ठीक से तो बस अच्छा ठीक है ऊपर ऊपर से देख लिया, हाँ ये अंदर का तो हम खुद ही लिख देते थे, right? Like I have been doing that honestly, so maybe I hope you all might have also done it or tried it sometime. So headlines will actually give you the guidance कि पूरे obviously उसमें detail किस चीज का discussion होने वाला है. So you don't have to go through the entire paragraph. हेडलाइन पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा आप उसका पहला पैरा पढ़ लीजिए. अगर आपको लग रहा है कि दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू माय सिलेबस, समथिंग दैट वुड हेल्प मी इन राइटिंग द आंसर्स इन माय एग्जाम, सिर्फ तभी आप उसमें हेड अप कीजिए, आगे बढ़िए, अदरवाइज यू कैन टोटली स्किप इट. बट इफ यू आर अ न्यू रीडर टू द न्यूज़पेपर, आई वुड स्टिल रेकमेंड कि एक वीक आप उसे पढ़िए, ताकि आपको फिर नेक्स्ट वीक से ही आपको आइडिया लग जाएगा दैट दिस इज नॉट रेलिवेंट एंड यू कैन देन कंफर्टेबली स्किप. फिर आपको फोमो नहीं रहेगा, व्हिच वी कॉल एज द फियर ऑफ मिसिंग आउट ऑन टू समथिंग. सो आप अभी स्टार्टिंग की एक वीक आप पढ़ सकते हो, उसे एक थोरो जल्दी से एक रीडिंग दे दीजिए, चाहे अगर आपको कुछ इररेलेवेंट लग रहा है तो. But otherwise, you can go through the headline and you can decide for yourself whether or not this article will be important for me or not. Then editorials always.
But with always, please don't confuse that all editorials always. No, there are only selective editorials which you have to read. For those जिनको भी confusion है कि editorials हम किसको कहते हैं, I'll also navigate you through the newspaper, then आपको पता लग जाएगा. Basically क्या होता है, जब newspaper हम पढ़ते होते हैं तो जो सबसे बड़े बड़े articles होते हैं ऑलमोस्ट 8th या 9th पेज पे, 7th 8th पेज पे या 6th 7th पेज पे जो आर्टिकल्स होते हैं उनको हम एडिटोरियल्स कहते हैं. ऑलराइट. और एक ओप एड पेज होता है, ओपीईडी, विच इज द ऑपोजिट टू द एडिटोरियल पेज. ओके, सो इनमें सबसे बड़े आर्टिकल्स आते हैं जो एट लेंथ डिस्कस करते हैं. जो एक्सप्लेन्ड पार्ट आता है इंडियन एक्सप्रेस का, नथिंग लाइक दैट. आप नेट पे भी सर्च करोगे इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड, तो बेसिकली एज द नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग कि कॉलम का ये नाम होता है एक्सप्लेन्ड. जो कोई भी करंट प्रॉब्लम चल रही होती है, सिचुएशन या कुछ भी होता है, वो उसको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में एक्सप्लेन कर देते हैं, विच इज सो बेसिक कि किसी को अगर उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, ही हैड जीरो आइडिया अबाउट इट, ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अच्छा दिस वाज द टॉपिक. फॉर एग्जांपल फार्म बिल्स का टॉपिक आप ले लीजिए, ठीक है. तो फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता कि भाई क्या इशू है, क्यों फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अगर एक्सप्लेन्ड में आपको अगर इसका एक आर्टिकल मिल जाएगा तो वो आपको स्टार्टिंग से एंड तक नेविगेट कर देगा कि अच्छा दिस वाज द इशू, दीज आर द प्रोज ऑफ दिस, दीज आर द कॉन्स ऑफ दिस एंड एवरीथिंग. सो आई वुड सजेस्ट कि एक्सप्लेन्ड सेक्शन को भी आप जरूर एक बार देखें. एंड देन देयर इज अनदर सिमिलर सेक्शन called as the FAQ or the frequently asked questions section from Sundays The Hindu. तो जब जो संडे के दिन पे जो द हिंदू न्यूज़पेपर आता है उसका ये FAQ सेक्शन होता है. सो एक्सप्लेन्ड कम्स एवरी डे इन इंडियन एक्सप्रेस एंड FAQ सेक्शन कम्स ओनली ऑन संडे बट इन द हिंदू. देन नेशनल न्यूज, ऑब्वियसली नेशनल इंपॉर्टेंस की कोई न्यूज है, नेशनल सोवरेनिटी से कोई रिलेटेड न्यूज है, इंडिया ने कहीं किसी को रिप्रेजेंट किया है, कहीं किसी का मेंबर बना है. फॉर एग्जांपल इंडिया रिसेंटली अभी एक नॉन परमानेंट मेंबर जो हमारी यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का बना है, सो दैट यू शुड नो अबाउट इट. सो एनीथिंग दैट एड्स टू द नेशनल रेलेवेंस, वो आप जब फ्रंट पेज पढ़ोगे अपने न्यूज़पेपर का, आपको वहीं पे कवर हो जाएगा. Then, now this is a bit tricky part to understand, but a very interesting one, like derived news items. Now I'll give you a very subtle and very hyped example of this, anti-defection law. So every now and then, like कर्नाटका में, मणिपुर में बहुत बार आर्टिकल्स आते हैं, तो हम उसको पॉलिटिकल न्यूज समझ के obviously and we have to ignore it, okay? But the concept of anti-defection law, which is coming up again and again in the news, should be known by you, since it is a very important concept if it comes to the Constitution of India. So this is how you derive the news. It was not exactly talked about that what is anti-defection law per se, but क्योंकि anti-defection हो रहा था, the political parties are suffering due to it, this and that, you don't have to get into it, but you should know what anti-defection law is. Another example that I could give you of this is, for example, terrorism पे कोई न्यूज आती है, ठीक है. तो अब कौन अलकायदा है, बेसिक तो चलो हम सबको पता ही होता है, यू डोंट हैव टू लिटरली गेट इनटू कि कौन किसका मेंबर है, किसने किसके साथ क्या किया. बट there is a very important anti-terrorism law which is the FATF, Financial Action Task Force. तो कभी कभी क्या होता है, आर्टिकल्स में सिर्फ एक वर्ड में दिया होता है FATF, एक्सप्लेन नहीं किया होता उसको कि क्या है, बट यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू नो दैट अच्छा दिस इज FATF. बाकी आप जो है उनके साथ कोरिलेट कर सकते हो इश्यूज को, बट डिराइव्ड न्यूज इसको हम कहते हैं. ओके, सो दीज आर द थिंग्स व्हाट यू हैव टू रीड. दैट इज व्हाई देयर इज अ ग्रीन टिक ऑन दिस कि आपको ये सब चीजों पे ध्यान देना है.